ठीक है ना। सो दिस वन इज कनेक्टेड, फिर यहाँ से करंट जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर जाएगा। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया बेटा। डायोड इज योर फॉरवर्ड बायस्ड, सो इट विल कंडक्ट, तो ये कंडक्ट करेगा। तो ये 10 ohms और ये 10 ohms पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? इट विल बी इन योर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब R इन पैरेलल विल बी इक्वल टू योर, सिमिलर रहे जब 10/2, यानी दिस विल बी इक्वल टू योर 5 ohms। सो अब इसका रेजिस्टेंस अगर मैं ड्रॉ करूं तो यहाँ पर सर्किट ऐसा कुछ बनेगा। सो हियर देयर इज ए रेजिस्टेंस हियर, and here now this is one resistance, so here this one is your 10 ohms, this will be your 5 ohms, this is 30 volts. So I need to calculate the potential across your AB. So first calculate the total current which is coming from this one. So total current कितना आ रहा है देखो बेटा, how much is the total current? Can anyone tell me बेटा? I is equals to V by R, total current will be equal to how much? I is equals to V by R. I is equals to V by R effective. V की वैल्यू कितनी है? 30 divided by 15, ठीक है ना। 10 and 5 are in series, 15 ones are 15 twos are, यानी 2 amperes. Potential across your AB मतलब देखो बेटा, potential across your AB मतलब whatever is the current passing through that one, potential V is equal to how much बेटा? कोई बताएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल अक्रॉस दिस वन कितना होगा? एनीवन? मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। जब सीरीज कॉम्बिनेशन में रहता है पोटेंशियल निकालने का तरीका, जब रेजिस्टेंस सीरीज में रहेंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल मतलब उसका रेजिस्टेंस टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय योर R1 प्लस R2। अगर मुझे यहाँ पर चाहिए तो उसका रेजिस्टेंस टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, यानी अपन को निकालना है V2, ठीक है ना। तो ये वाला कैसा हो गया देखो, यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पर मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा 5 इंटू टोटल वोल्टेज कितना है 30 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 मतलब 10 प्लस 5, this will be equal to 5 into 30 divided by 10 plus 5, this will be 15। तो कितना आया बेटा? 5 1s are 5 3s are 3 1s are 3 10s are, ये हो गया 10 volts, so it will be your 10 volts, it will be 10 volts। आया सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। In common emitter mode, the input characteristics of a transistor is the variation of base current against the base emitter at a constant collector and emitter, collector current against input बोल रहा है ना बेटा। कॉमन एमिटर मोड में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कितना होगा बेटा? बेस से ही होगा, बेस विल बी द इनपुट करंट एंड द पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू योर बेस एंड emitter, isn't it, at your constant and emitter। So first option will only be the answer for this direct question। The valency of the impurity atom that is to be added to germanium crystal so as to make it your n type of your semiconductor will be equal to how much बेटा? जर्मेनियम के लिए कितनी impurity ऐड कर रहे हैं तो n type बनेगा, pentavalent, so it should be your 5, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स यानी आउटपुट वोल्टेज वर्सेस योर इनपुट वोल्टेज फॉर द बेस biased transistor in the common emitter configuration as shown in the figure for using the transistor as a switch। अगर ट्रांजिस्टर ने स्विच यूज कर रहे हो तो फर्स्ट वाला रीजन जो है ना ऑन रीजन में होना चाहिए, और सेकंड वाला स्टेज इज यूज्ड एज ऑफ योर एम्पलीफायर, दिस इज यूज्ड एज ऑफ योर एम्पलीफायर बेटा।
एंड थर्ड वाला स्टेज जो है ना हाफ के साथ का होना चाहिए. So when it is using as of your switch, याद रख लो first वाला region on, third वाला region half और बीच वाला region will be acting as of your amplifier. यानी this is your active region. यही अपना active region होगा. तो उसने क्या बोला? Transfer characteristics output voltage versus input voltage for the base bias transistor in the common emitter configuration is shown for using the transistor as a switch. तो region कौन सा होगा बेटा अभी? स्विच ऑन एंड ऑफ पे वर्क करेगा ना बेटा. ऑन एंड ऑफ पे वर्क करेगा मतलब 1 and 3. सो बोथ द रीजन 1 and 3 विल बी द आंसर. ठीक है. चलो नेक्स्ट वन. द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन जर्मेनियम इज 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड Hc की वैल्यू दे रखा है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम्स. मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन दैट विल बी जनरेटेड द इलेक्ट्रॉन होल पेयर विल बी इक्वल टू हाउ मच. मैंने एनर्जी गैप का फॉर्मूला बताया था बेटा. एनर्जी गैप का फॉर्मूला क्या होता है? Energy gap will be equal to your Hc divided by your lambda. इसमें से अपने को वेवलेंथ निकालना है. वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल्स टू योर Hc डिवाइडेड बाय एनर्जी गैप. सो Hc की वैल्यू दे रखा ऑलरेडी 12400 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ही शुड बी गिवन. हम लोग को एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा. एनर्जी गैप कितना दे रखा है बेटा? 0.72. ये देख लीजिए कितना आ रहा. दैट विल बी द आंसर. सो कैलकुलेशन कर लीजिए बेटा आप लोग. ठीक है ना. नेक्स्ट वन. व्हेन अ सेमीकंडक्टर इज हीटेड इट्स रेजिस्टेंस क्या होगा बताइए कोई. जैसे सेमीकंडक्टर को हीट करेंगे उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? सेमीकंडक्टर इज अ मटेरियल जिसके अंदर अपने पास होल्स एंड क्या क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर आप हीट कर रहे हैं तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिक्रीज. सो द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वन विल बी डिक्रीज. सेवेंथ वन देख लीजिए. Assuming the diode to be a silicon, the diodes to be a silicon with forward resistance as 0. Okay, the current of your eye in the following circuit is. Okay, चलो पहले देख लेते हैं. ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये पी टाइप है तो ये फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा और ये रिवर्स बायस्ड हो जाएगा. ठीक है ना. तो पूछ रहा क्या बेटा इसमें? Assuming the diodes to be made up of your silicon with forward resistance 0, current I in the circuit. चलो करंट बताएगा कोई इसके अंदर बेटा? कैन एनीवन टेल मी द करंट इन दिस वन? बताइए जल्दी से. अप्लाइड वोल्टेज कितनी है? EMF is given for me as 20 volt and resistance is given for me as 2 kilo ohms, isn't it? And forward bias का resistance जो है ना basically that is given how much for me बेटा? इसका resistance कितना दे रखा है? 0. फॉरवर्ड बायस्ड रेजिस्टेंस का उसका इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कितना है बेटा? 0. करंट पूछ रहा है तो I is equals to V by R. V is nothing but E only ना बेटा. E by your R. यानी E की वैल्यू कितनी है बेटा? 20 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू 2 किलो यानी 2 into 10 to the power of 3. 10 to the power of 3 मतलब this will be equal to your 10 divided by 10 power 3. 2 ones are 2 tens are. That will be equal to your 10 into 10 to the power of minus 3. Isn't it? That will be equal to your 10 milliamperes. 10 power minus 3 मतलब कितना बेटा? मिली ना. So it will be your 10 milliamperes. Sorry, वो कलर नहीं दिख रहा शायद. So I'm using the different color. चलो. The emitter base junction of the transistor is. The emitter base junction of your transistor is dash biased, while the collector base junction is dash biased. Emitter base junction of a transistor is dash bias while the collector base junction is what bias? Obviously emitter and base कभी भी कौन सा होना चाहिए बेटा? Forward bias होना चाहिए, isn't it? It should be your forward and collector base should be equal to your reverse. And second option will be the answer. ठीक है. The energy band diagram for 3 semiconductor implies the silicon are as shown. We can then assert that देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच में गैप है. यहाँ पर फर्मी लेवल इस कंडक्शन बैंड के पास है. यहाँ पर जो लेवल है it is nearer to the valency band. So sample X is undoped while the samples Y and Z have doped with a third group and a fifth group impurity respectively. Okay. Sample X is undoped while both the samples Y and Z are doped with the fifth group impurities. Okay. Third option. Sample X has been doped
अब ये डूप है with equal amount of third and fifth group impurities with the sample Y and Z are undoped. Okay. Option number D. Sample X is undoped while sample Y and Z have been doped with the fifth group and a third group impurity. So the energy band graph for the three semiconductor samples are shown. So we can insert that what will be the condition. तो बताइएगा. एनर्जी बैंड है तो यहाँ पर कुछ भी एनर्जी बैंड नहीं दिया X के लिए. That means there is no impurity in this one. There is no impurity. अगर no impurity means it should be obviously undoped. It should be obviously undoped. Undoped मतलब either first option हो सकता है या थर्ड ऑप्शन में भी undoped दे रखा है. थर्ड ऑप्शन में डूब दे रखा है तो ऑब्वियसली ये तो नहीं होगा तो सीधा सीधा थर्ड निकाल सकते हैं अपन. तो ये बी और डी के अंदर अपने को करना है. अब नेक्स्ट वन देखिए बेटा यहाँ पर सैंपल वाई में इम्प्योरिटी लेवल लाइज बिलो द कंडक्शन बैंड. ये मेरा कंडक्शन बैंड है ये मेरा वैलेंसी बैंड होगा. ये भी कंडक्शन बैंड होगा और ये वैलेंसी बैंड होगा. isn't it? So वाई के अंदर देखो बेटा इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल इज लाइंग बिलो द कंडक्शन बैंड. सो इट इज डूप्ड विद व्हाट ग्रुप बेटा फिफ्थ ग्रुप है ना. अगर नीचे रहेगा तो Z impurity energy level is lying above the valency band. So it is doped with your third group. Simple. So sample X is undoped while Y and as well as Z have been doped with your fifth group elements and the third group elements. So fourth option will be the answer. Okay. Which of the following is not equal to 1 in the Boolean algebra? Okay. A डॉट ए बार का पूरा बार ए डॉट ये पूरा मैंने आप लोगों को करवाया था क्लास में याद है आप लोगों को. एक बार मैं लिख दे रहा हूँ देखिए फिर भी यहाँ पर आप लोग के लिए ए डॉट ए बार का पूरा बार यानी कितना हो जाएगा बेटा ए बार. जब ये निकाल रहे हो बेसिकली तो सिंबल चेंज हो जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस और ये हो गया यहाँ पर ए डबल बार. isn't it? ये डबल बार मतलब क्या बेटा ए बार प्लस ऑफ ये और ये. That means a bar plus a will be equal to how much for me 1. ठीक है ना. उसके बाद नेक्स्ट वन वाला देखिए ए वाला a dot a bar will be obviously equal to 0. A plus a bar that is also equal to 1. A plus a bar that is also 1. A plus 1 this will be equal to 1. So which of the following is not equal to 1 बोला. Not equal to 1 मतलब B. B will be the answer. अगर आंसर्स आ रहे तो चार्ट बॉक्स में दे सकते हो बेटा आप लोग आंसर्स. डोंट वेट ओनली फॉर मी टू गिव द आंसर. चलो if beta RL and R are the AC current gain, load resistance and input resistance of a transistor respectively in the common emitter configuration, the voltage and the power gain supplies will be equal to your how much? A direct question है. Can anyone give me the answer बेटा? कौन सा configuration है? Common emitter configuration है. This one is your common emitter configuration. So is asking the voltage gain and as well as of your power gain. So common emitter के लिए beta हो जाएगा बेटा. That is output resistance by input resistance. It will be equal to beta RL divided by R. तो first option में है, second option तो नहीं होगा, third option में है, fourth option भी नहीं होगा. तो fourth नहीं होगा, first नहीं होगा. It should be between A and as well as of B. एंड पावर गेन के लिए तो बीटा स्क्वायर है तो यहाँ पर बीटा नहीं है तो ऑब्वियसली ए विल बी द आंसर. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड एक बार आप नोट चेक कर सकते हो. आई हैव गिवन देयर दिस फॉर्मूलास. ओके 12th वन. व्हाट इज द करंट थ्रू द आइडियल पीएन जंक्शन डायोड शोन इन द फिगर बिलो. ठीक है दिस इज नेगेटिव यानी दिस वन इज रिवर्स बायस. क्योंकि नेगेटिव इज कनेक्टेड टू पी टाइप सेमीकंडक्टर. दिस इज एन टाइप. यहाँ पर 1 वोल्ट है एंड दिस वन इज राइट नाउ नेगेटिव टर्मिनल. दिस इज -3 वोल्ट्स. दिस इज -3 वोल्ट्स. तो किसके पास पोटेंशियल ज्यादा है बेटा? एन साइड के पास पोटेंशियल ज्यादा है isn't it? So n के साइड इनसाइड के पास पोटेंशियल ज्यादा ओके कंपेयर टू योर पी साइड. सो डायोड कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑब्वियसली दिस विल बी योर फॉरवर्ड बायस. तो यहां से अगर मैं इसको लिख रहा हूं तो दिस विल बी योर राइट नाउ फॉरवर्ड बायस. क्योंकि इससे कंपेयर नहीं कर रहे ना, इन दोनों से कंपेयर करा जाए तो ये दिस विल बी योर फॉरवर्ड बायस. एक्चुअली पी इज कनेक्टेड टू नेगेटिव. ये रिवर्स बायस होना चाहिए था लेकिन इसका पोटेंशियल कंपेयर करिए. यहाँ पर 3 वोल्ट है और यहाँ पर 1 वोल्ट है
You know, -3 -1 है. -3 is more, so obviously n side is more dominant, more potential, isn't it? So it is forward biased. Okay, resultant potential कितना हो जाएगा बेटा? What will be the resultant potential? 2 volts. उसमें करंट कितना हो जाएगा? I is equals to V by R. V की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 2 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू कितनी है? 100. So 2 by 100 मतलब कितना हो जाएगा बेटा? So that will be equal to 2 into 10 to the power of -2. Isn't it? Yes, कैसे भी लिख सकता हूँ मैं? 20 into 10 to the power of -3. तो ये बन जाएगा 20 मिली एम्पियर्स. ठीक है ना? 2 into 10 to the power of -2 is nothing but 20 into 10 to the power of -3 only ना बेटा. So 20 milliamperes. C will be the answer. ठीक है? चलिए. The charge on the hole is equal to the charge of. बोला जल्दी. The charge on the hole is right now for me what? Positive. That means 0, proton, neutron and deuteron. तो क्या आंसर हो जाएगा बेटा? Positive मतलब it should be a proton. Bonds in the semiconductors are trivalent, covalent, bivalent, monovalent. Direct question है. What will be the covalent? Very good. Sure. In the given figure, which of the following, which of the diodes are forward biased? कोई बता सकता है? देखो जल्दी से. ये 0 वोल्टेज है, P टाइप, और यहाँ पर this one. तो क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से. The given figure, which of the diodes are forward biased? बताइए आप लोग बताना. You should tell me the answer. Forward bias के लिए कौन सा forward bias है? In the given figure, which diodes are forward biased? This is your P type. This is connected to negative terminal, isn't it? And this one is your N type, and it is connected to your plus. Okay. This is your positive. ये हो गया मेरे पास N type, और ये हो गया P type. P type is more than compared to this one. ये forward biased होगा. N type के पास क्या है बेटा? पॉजिटिव है, और P type के पास नेगेटिव है. तो obviously this one is reverse biased. This one is forward biased, isn't it? And यहाँ देखिए बेटा, this is P and this is N. N के पास 0 वोल्ट है, P के पास माइनस है, तो this one is reverse biased. चलिए, उसके बाद ये देखिए -12, ये P टाइप सेमीकंडक्टर, ये N टाइप. N के पास -12 है, P के पास -5 है, isn't it? तो ये P के पास more potential है ना, more positive, तो this will be your forward bias. This will be your forward bias. ये P टाइप है, ये N टाइप है. P टाइप is 0 and N type is -2, isn't it? तो किसके लिए क्या हो जाएगा बेटा? P is more compared to -10 बेटा, है कि नहीं? This will be your forward bias, isn't it? The first one is reverse bias, तो first one नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो अपने को B में और D में आंसर होना चाहिए. ओके चलो, 2 तो फॉरवर्ड बायस्ड है, ये तो सेकंड वाला ले रहा हूँ मैं. फिर ये थर्ड वाला है, ऑप्शंस नहीं दिया तो ऐसा कुछ देख लो. ये 1 होना चाहिए, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5. So forward bias कौन कौन है बेटा? 2 is forward biased and 4 is forward biased and 5 is forward biased. Which option? B. Very good. So B will be the answer. चलिए next. Symbolic representation of the photodiode is. Symbolic representation of photodiode is. कोई बोल सकता है? फोटोडायोड के लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? डायोड पे लाइट गिरते रहना चाहिए, isn't it? So what will be the answer? ये जीना डायोड का है, ये वेरिएबल कैपेसिटर का है. So this is the diode with the photons on this one. ये तो लिबरेट कर रहा है. C will be the answer. On adjusting the PN junction, diode is forward biased. On adjusting the PN junction, diode is forward biased. Depletion layer increases. Forward bias में depletion layer decrease होगा बेटा, isn't it? Resistance increases, resistance decrease होगा. Both decreases, yeah. Depletion layer decrease होगा, resistance भी decrease होगा. This should be the answer, obviously. Next one. Based on the energy band description, a solid can be classified as semiconductor if energy gap between valency band and the conduction band is how much? कितना होना चाहिए बेटा? मैंने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था ये. Energy gap should be
कितना कोई आंसर दे रहा? सी, वेरी गुड, लेसर देन ऑफ योर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। क्लास नोट्स एक बार चेक कर लीजिए। इन कॉमन बेस एम्पलीफायर द फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, वेरी गुड, ये देखिए मैंने ऑलरेडी 2 बार मैंने करवाया था ये क्लास में। कॉमन बेस एम्पलीफायर में फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट सिग्नल और आउटपुट वोल्टेज के बीच में कितना होगा? कितना होगा? कॉमन बेस एम्पलीफायर में फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? देख के बोलिए बेटा। कॉमन बेस है बेटा, कॉमन एमिटर नहीं है। कॉमन बेस के अंदर, कॉमन बेस एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल इज एम्पलीफाइड, मतलब अगर ये अपना इनपुट होगा तो आउटपुट भी आपको उतना ही होगा, लेकिन एम्पलीफाइड होगा थोड़ा बड़ा। तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं है, इट विल बी 0। और कॉमन एमिटर होता तो उल्टा होता, तो 180 डिग्री होता। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो 20 देखिए। द कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज यानी आउटपुट VC is equals to 6 volt, and voltage drop across the resistor, voltage drop across resistor, voltage drop across resistor, voltage drop across the resistor 600 ohm in the collector circuit is 0.6 volt in a transistor connector in common emitter mode. Okay, common emitter mode. If current gain is 20, what is the base current? So collector current कैसे देंगे बेटा अपन? Collector current means IC. IC is equals to VC divided by RC. VC की वैल्यू कितनी है बेटा? ये कितना है? The collector supply voltage is, supply voltage मतलब input, isn't it? Supply voltage मतलब input. Collector circuit मतलब ये हो गया VC. VC की वैल्यू कितनी है? 0.6. This is your 0.6 divided by resistor across load. कितना रेजिस्टेंस अक्रॉस लोड? कितना में दिया? 600। ये हो गया मेरे पास 600। तो कितना आ रहा बेटा ये? 0.6, यानी 6 चले जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल टू 10 पावर -3 एम्पियर्स, यानी ये हो गया 1 मिली एम्पियर। ठीक है ना? करंट गेन कितना दे रखा है? बीटा, यानी बीटा इज गिवन फॉर दिस वन इज नथिंग बट बीटा। बीटा इज 20 and collector current is your 1 milliampere. What is asking the problem? Base current. So what is the formula? Beta is equals to, formula कितना है बेटा? IC divided by your base current. तो base current निकालो इसमें से। Base current is equals to your collector current divided by your beta, है कि नहीं? So this value will be equal to how much only? Collector current कितना आ गया? 1 milliampere. 1 milliampere divided by beta. Beta की वैल्यू कितनी है? 20। कितना होगा? 1/20, 0.05 milliampere, and B will be the answer. Clear है? चलो, in common base transistor, current gain is 0.98. current gain मतलब बेटा common base में अल्फा की वैल्यू 0.98. On changing the emitter current by your 5 milliampere, emitter current मतलब IE की वैल्यू दे रखा है 5 milliampere. The change in the collector current is how much? यानी अल्फा की वैल्यू लिख लो. Alpha value is equals to your change in collector current divided by change in your emitter current, isn't it? Is asking the change in collector current, यानी delta IC. Delta IC is equals to alpha into your delta IE. Isn't it? That means I'm writing this value here, that is equals to alpha की वैल्यू कितनी है? 0.98 into IE की वैल्यू, IE की वैल्यू कितना है? 5 milliamperes. So this is 5 milliamperes. So 0.98 into 5 कितना आ रहा देखिए? 4.90 milliampere approximately. 4.90 milliampere. Yeah, 4.9 C. C will be the answer. Yeah, very good. Two PN junctions can be connected in series by 3 different methods as shown in the figure. The potential difference in the junction is the same. Then correct connection will be equal to how much? Okay, let me check with P is connected to positive. This P is connected to negative. Wrong connection.
isn't it? So what will be the correct connection? But can anyone tell me? P is connected to positive, N is connected to negative. Then the correct connection is asking. Okay, this is a correct connection. And N is connected to positive, and P is connected to negative. This is again wrong connection. Two PN junction can be connected in series with three different methods as shown in figure. Potential difference in the junctions is same. Okay, potential difference it is same means then correct connection will be equal to wrong. Obviously, second one is a correct connection. Because in case one N is connected to your right now. See, P is connected to positive, and this P is connected to what? Forward reverse bias P and P, P and P. This is PN, this is your PN. Okay. This is your NPN. What will be the answer, beta? Current junction will be equal to 2 is correct and 3 is correct. So B will be the answer for this. What it? Junction diode, beta. PN junction diode. P is always connected to P and as well as of your N. Another one is also connected to your N and P. Isn't it? This one is right now PN and this one is your PN. Isn't it? So in middle it should be same only, na? यहाँ पर देखो PNP transistor reverse bias. Clear? Next one. An intrinsic semiconductor at a 0 Kelvin temperature will always behave as I already told you. At 0 Kelvin, there is no free electrons for the conduction. Therefore, 0 Kelvin, intrinsic semiconductors with 100% will act as of your insulators. The best answer is right now for MIDI. Okay. For transistor amplifier, the voltage gain is, can anyone tell me better? For transistor amplifier, the voltage gain क्या होगा? Voltage gain is low at high and low frequency, and it is always constant at the middle beta. So it is low and it is low at high and low frequency and constant in the middle. It should be the B. You can refer your ones in CRT for this one. Next one, 25. Current in the circuit will be equal to how much? Okay, let me check with this one. This is positive, negative. This is connected to negative. This one is reverse bias. This is connected to positive. This is your forward bias. So we'll try to take only this circuit beta. So diode in the lower branch is forward bias and upper branch is reverse bias. So we can directly remove this one. There is no use. So we can take only the current in this one. So these two are in which combination right now, beta? This is one resistance down, and down there is one resistance. This is one. So this is your 30, this is your 20, and here 5 volt. So current from this one is your I. So I is equals to V by R effective. So V value is 5 divided by R effective is 30 plus 20. That means 5 divided by your 50. So it is 5 ones are 5 tens are, that means 1 by 10. Yeah, 5 by 10. Anything. 25. 5 by 50 also get that. In the for this transistor circuit shown below, beta value is 100. Okay. This is collector, this one is base, this is emitter. Okay. So base is positive. So this one is forward biased. Obviously, this one is your reverse bias. Anything. Voltage drop between emitter and base. Emitter and base voltage drop is how much for me? 0.7 volt. Then the value of your CE, that means collector emitter current will be equal to your how much? So base current already, if I am calculating better, base current will be equal to input voltage is 5, but already drop is given as 0.7. That means I is equal to V by R. V value is 5 minus 0.7 divided by resistance is 8.6. It is your 8.6. So obviously that will be equal to somewhere around. See how much I am getting this one? 5 minus of your 0.5 divided by your 8.6. ये कितना आ रहा है देख लीजिए बड़ा जल्दी से. This will come out for me somewhere around 0.5 milliamperes. So beta value is given for me. That means beta is equals to your IC divided by your I base. So I can calculate the collector current from this one. Collector current is equals to beta into your base current. Beta value is 100. Base current is 0.5 milliamperes. That is 0.5 milliamperes. So now this one output potential. So potential across your collector and emitter will be equal to your potential across this VCC. This one is VCC. So this one is VCC minus of your current passing through this one. That is nothing but output current IC into your RL. Basic formula. VCC is how much for me? 18 minus IC value is how much for me? 100 into your
0.5 milliamperes into load resistance. Load resistance is given how much in the problem, beta? 100. This is load resistance. This is RL. RL will be equal to 100. That means this will be equal to your 18 minus 0.5 means 1 by 2. 1 by 2 means your 50. So this will be 50 milliamperes into your 100 milliamperes. That will be equal to your 18 minus 50 into 10 power minus 3 into your 100. So that will be equal to your 18 minus of 50. So this will be 0, 0. This will be equal to your how much for me? Now you can tell me the answer directly here itself. So ये देखो 3, ये 2 0, ये 0, ये चलेगा. 18 minus 5, isn't it? So 18 minus 5 is how much for me? 13 volts. 13 volts. NPN transistors are preferred to PNP. मैंने क्लास में भी करवाया था transistor because they have low cost, low dissipation, capacity of handling a large power. Electron is having high mobility than of your holes part population. Obviously, electrons are having high mobility than of your holes. The given figure shows the waveform for the two inputs A and as well as a B. ठीक है, A के लिए A0, A0, A1, A1, M. A0, A1, A0, A1. आउटपुट विल बी इक्वल टू योर आउटपुट. तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा, 0 से लेके T1 तक का A is value is 0, B value is also 0. That means if I am writing A, B and Y, A is 0, B is 0, Y is also 0. This one is here 0. This one is 0. This one is 0. This is 1. Then A value is 0, B value is 1. See, A value is 0, B value is 0, Y value is 0. The next one is nothing but 1, 0. This is 1, this is 0. Next one is 0. The next one is 1, 1. This is 1, this is 1. Obviously, this is also 1. So obviously, what gate is 1 beta? 0, 0, 0, 1 means it will be your AND gate. A will be the answer. Simple question. Okay, beta. Only 3 minutes is left with me. Let me do it fast. Common emitter amplifier has a voltage gain of your how much for me? 50. Okay. An input impedance as 100 ohms and output impedance as of your 200 ohms. The power gain of the amplifier is equal to how much? I hope everyone has been completed with your AC beta, isn't it? AC में impedance वगैरह आता है basically, power gain वगैरह. अगर करे हो तो ठीक है, otherwise you need to do it later. We'll do it later. In case of forward biasing of PN junction, which one of the following figures correctly dissipates the flow of your charges? Okay, ये negative है, तो negative मतलब holes. Negative मतलब holes, ये नहीं होगा. Flow of charge निकालना है ना बेटा. Positive charge means holes. It should move in the direction of your current, and negative charge should move in the opposite direction of the opposite direction to the current बेटा. तो इसमें flow of current कहाँ से हो रहा है? इस direction. This also same. This also same. And this also same. Isn't it? So in case of forward PN junction, which one of the following figures correctly dissipates the flow of your carriers? Okay, M should be flowing in the direction of your this one, and here is holes. Okay, this is positive terminal, this is your negative terminal. Okay, what will be the answer, beta? Holes should move in the direction of current, beta. Holes should move in the direction of your current. Which one? Anyone can give me the answer? These are the holes. These are your electrons. B are. ये holes है. Holes are going towards negative ना बेटा. और यहाँ पर electrons बोल रहा है. Electrons will always will drift in opposite direction. यहाँ पर देखो right now electrons. Holes का direction opposite होना चाहिए. यहाँ पर positive terminal flow of current ऐसा होगा. Holes opposite direction में. ये भी नहीं. ये holes same direction में ये correct है. लेकिन electrons forward bias के लिए electrons should be in the opposite direction to the flow of current. ये भी correct है. तो B should be the answer. Check. The following circuit time हो गया बेटा, 1 ही मिनट बचा है.
द फॉलोइंग सर्किट I1 and I2 are is equals to how much? ये जल्दी करके बताओ तो जल्दी. ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो फॉरवर्ड बायस्ड, ये भी पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये भी फॉरवर्ड बायस्ड. तो ये दो कौन सा कॉम्बिनेशन में हो गए? पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, इजंट? और ये पैरेलल में हो जाएंगे, इसके साथ सीरीज में हो जाएंगे. तो करंट विल बी इक्वल टू, और I इज इक्वल्स टू V बाय R इफेक्टिव. ये कितना हो जाएगा बेटा? ये पैरेलल में मतलब 14 into 12 डिवाइडेड बाय 14 प्लस ऑफ योर 12, इजंट? तो कितना हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस हो ना बेटा. ये देखो यहाँ पर ऐसा कंडक्टर हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, isn't it? It will become for me short circuit. I1 will be equal to how much beta?